Hello students, today we will start chemical bond from chemical bonding and elements in biological system. So what is a chemical bond? A chemical bond is defined as the attractive force that holds various constituents, particles, atoms, ions or molecules in different chemical species. यानी कि केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि किसी भी केमिकल स्पीसीज के अंदर जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको एक जगह बांध कर रखती है, उन सबको एक जगह होल्ड करके रखती है, तो वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड। तो ये एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं? द क्वेश्चन इज व्हाई एटम्स कंबाइन। व्हेन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म a bond, there is an overall decrease in the potential energy of the combining atoms. That is, a system having bonded atoms has lower energy than that having the unbonded atoms. This implies that the system of bonded atoms having lower energy is more stable than that of unbonded atoms having higher energy. From this, it therefore follows that the process of chemical bonding between the atoms decrease the energy of the combining atoms and give rise to the formation of system which has lower energy and hence the greater stability. यानी कि जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. The second reason is that the atoms have a tendency to get the noble gas configuration, that is they have a tendency to get the 8 electrons in their outermost cell. इसीलिए जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं और वो फोर्स जो उन सबको एक केमिकल स्पीसीज के अंदर बांध कर रखती है, होल्ड करके रखती है, वो कहलाती है केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग. तो केमिकल बॉन्डिंग में हम सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे. आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? एन आयनिक बॉन्ड इज दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more electrons from the valence shell of an atom are completely transferred to the valence shell of another atoms. अब कौन से वो ट्रांसफर करेंगे? जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पॉजिटिव एलिमेंट है जैसे Na, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और जिसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. Thus an ionic bond is established between the two atoms whose electronegativity difference is very high. यानी कि आयनिक बॉन्ड के लिए जो दो स्पीसीज हैं, दो एटम्स हैं, उनके बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होना चाहिए. एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव, तब जो है उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा. द एटम दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज while the atom that accepts electron become negatively charged. हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का. अगर Na इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा तो Na पॉजिटिव बनेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl नेगेटिव बनेगा. The cations and anions thus obtained are then attracted towards each other by the electrostatic force of attraction and thus linked together by an ionic bond. Thus an ionic bond can also be defined as the electrostatic force of attraction existing between the cations and anions of an ionic compound. In the formation of an ionic bond or ionic compound, energy is released. The cations and anions obtained by the loss or gain of electrons attain the nearest noble gas configuration. Example, formation of ionic bond in NaCl. The electronic configuration of Na is 281. There is one electron in its outermost shell. It loses its one electron and form Na positive. And electronic configuration is 28 and it loses one electron. What are the favorable conditions for the formation of an ionic bond? Ma positive X negative crystals like NaCl. तो क्या क्या कंडीशंस हैं जिन कंडीशन में जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं? द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम M. जो भी हम एटम M ले रहे हैं एंड इज सप्लाइड टू इट लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन and is converted into M positive cation. What is ionization energy? The energy required to remove
1 electron from the outermost shell of an atom in its gaseous state. m जो है जिस समय जो आयनस एनर्जी है किसी भी एटम m की उतनी सप्लाई की जाएगी जो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल हो. तो ये क्या करेगा, इट लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन एंड इज कन्वर्टेड टू m पॉजिटिव कैटायन. m प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ m is equal to m positive plus electron. Second, now the atom X takes up the electron given up by m and is converted into X negative anion. In the formation of X negative ion, energy equal to the electron affinity of X is released. यानी जो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसमें से हमें एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी इक्वल होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X. X पॉजिटिव प्लस E इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे X नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X. Third, now M positive and X negative ions combine together due to the electrostatic force of attraction existing between them and form M positive X negative ionic crystal. In this process, energy equal to lattice energy of M positive X negative ionic crystal is released. M positive plus X negative gives M positive X negative is ionic crystal plus lattice energy of Mx. Different steps shown above indicate that the favorable conditions for the formation of an anionic bond or an anionic compound can be described as follows. जितना भी हमने पढ़ा है उससे हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं. फर्स्ट, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम m, यानी कि जो भी एटम है जिसे हम m कंसिडर कर रहे हैं कि मान लीजिए एटम m है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम m शुड बी लो सो दैट दिस एटम में लूज द इलेक्ट्रॉन रीडली टू फॉर्म द कैटन m पॉजिटिव. यानी कि पहली फेवरेट कंडीशन क्या है कि जो भी हम एटम ले रहे हैं उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए. जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तब उससे इजीली वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. सेकंड, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम X. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X शुड बी हाई सो दैट दिस एटम में एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम m, जो एटम m है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को ले सके. तीसरा, हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ m पॉजिटिव X नेगेटिव आयनिक क्रिस्टल. ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द constituent ions in an ionic solid, greater is the stability of the ionic solid, and greater is the magnitude of lattice energy of an ionic solid, greater is the force of attraction between the ions, is the direct measure of the electrostatic force of attraction between the ions, and hence greater is the stability of the ionic solid. Thus, in order to get strong ionic bond in an ionic solid, its lattice energy should be very high. यानी कि अगर जो आयनिक क्रिस्टल है उसकी लैटिस एनर्जी हाई होगी तो जो आयनिक बॉन्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे. लैटिस एनर्जी कैसी होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो जो आयनिक बॉन्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे. फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन m एंड x शुड बी वेरी हाई. यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले एटम m और x एटम्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए सो दैट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी टेक प्लेस. यानी तभी उनमें जो कंप्लीट ट्रांसफर होगा जबकि उनकी एनर्जी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है आयनिक बॉन्ड की. द फर्स्ट, स्ट्रेंथ. आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म व्हेन ए मेटल एटम loses one or more of its outer electron and a non-metal atom acquires them. The metallic bond is formed by the attraction between the positively charged metal ions and the negatively charged electrons in the non-metal. The attractive force is called electrostatic force. The metallic bond is strong because of the strong attraction between two oppositely charged objects. दूसरा, charge separation. The ionic bond is the strongest and most reactive of the bonds. It forms when a metal atom loses one of its electron which moves over to a non-metal atom. The negative charge on one side attracts the positive charge, holding them together. The ionic bond makes molecules change their shape quickly and in a proper medium also dissolve
fairly easily. For example, sodium chloride is easy to dissolve in water because water molecules can move between the ions. Third, high melting and boiling points. The ionic bonded molecules have high melting and boiling point. Ionic compounds are compounds that contain ions. Ions are atoms or molecules with a net electrical charge because they have lost or gained electrons. The most common types of ionic bonds are electrostatic force, in which the negative electrons of atom are attached to the पॉजिटिव एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। तो ये हमने इसकी कंडीशंस पढ़ी कि क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? द लैटिस एनर्जी न्यू ऑफ ए क्रिस्टल इज द एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ द क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम गैसेज आयंस। यानी कि 1 ग्राम मोलिक्यूल्स जो क्रिस्टल फॉर्म करने हैं गैसेस आयन से, तो उसमें जो एनर्जी इवॉल्व होगी वो एनर्जी कहलाएगी उसकी लैटिस एनर्जी। फॉर एग्जांपल, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl इज -7082 किलोजूल पर मोल। लैटिस एनर्जीज कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक डाटा यूजिंग द बोर्न हैबर्ट साइकिल। इन्हें डायरेक्टली हम नहीं मेजर कर सकते, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक डाटा यूज करते हुए और बोर्न हैबर्ट साइकिल से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल वैल्यूज फॉर लैटिस एनर्जी मे बी कैलकुलेटेड। द आयंस आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी E between two ions of opposite charge is calculated. The formula is E is equal to Z positive Z negative E square upon R. In this formula, Z positive and Z negative are the charge on the positive and negative charge. Z plus positive charge, Z negative negative charge, and electron is the charge on an electron, and R is the interionic distance. For more than two ions, the electrostatic energy depends on the number of ions and also on their arrangement in space. For 1 mole, the attractive energy is calculated by E is equal to N naught A Z plus Z minus E square upon R, where N naught Avogadro constant, A is the Maudlin constant which depends on the geometry of the crystal. Okay, now we will know about the lattice energy and stability. यानी कि lattice energy और जो stability है किसी भी क्रिस्टल की, उसमें क्या रिलेशन है। Lattice energy gives measure the stability of ionic solids and is the amount of energy required to break an ionic lattice into its constituent ions. The greater the value of the lattice energy, the more stable will be the ionic compound. For example, the lattice energy of calcium chloride CaCl2 is greater than potassium chloride KCl, which means that the ionic compound CaCl2 is more stable than KCl. Now, lattice enthalpy and solubility. Lattice enthalpy और solubility में भी क्या relation है? If the lattice enthalpy has a larger value, the compound is less soluble. अगर lattice enthalpy ज़्यादा होगी तो compound जो है less soluble होगा. It is a positive number. The dissolving process is endothermic. If it is negative, it's exothermic. When a gaseous cations or a gaseous anion react with a solvent in the liquid state, solvated cation or solvated anion is obtained, and in this process energy is liberated, which is called solvation process energy. M positive plus solvation, solvent, M positive sol plus solvation energy. Now we see the Born-Lenz equation for the lattice energy of M2 positive X2 negative ionic crystal having NaCl crystal structure. Since the given ionic crystal has NaCl type structure, the value of potential energy of a pair of ions placed in an equilibrium distance R naught from each other. At equilibrium distance, the attractive and repulsive force in the crystal are the same, and जो
पोटेंशियल एनर्जी है वो दिस कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला Z positive Z negative E square A upon R naught 1 upon n minus 1 per ion pair and the unit is in CGS. AgCl has a very small solubility in water while NaCl is a soluble salt. Similarly, CO is the less soluble as compared to LiCl. Now we will see solvation enthalpy. Solvation enthalpy क्या है? First we see what is solvation. The solvation describes the interaction of solvent with dissolved molecules. Ionized and uncharged molecules interact strongly with solvent, and the strength and nature of this interaction influences many properties of the solute, including solubility, reactivity and color, as well as influencing the properties of the solvent such as the viscosity and density. So, in the process of solvation, ions are surrounded by a concentric shell of solvent. Solvation is the process of reorganizing solvent and solute molecules into solvation complexes. Solvation involves bond formation, hydrogen bonding and van der Waals forces. Solvation of a solute by water is called hydration. The energy of solvation is the amount of energy associated with dissolving a solute in a solvent. Again, we know that lattice energy is defined as the amount of energy released when 1 mole of an anion crystal is formed by combining the constituent gases cations and gases anions separated from each other by an infinite distance. Thus, if n is the Avogadro number, then it is given by lattice energy given by PER R0 into n, or U is equal to Z positive Z negative E square A n upon R0 1 upon n minus 1 per ion pair, and the unit is in CGS. Since n is always greater than 1, this n 1 upon n, this n is always greater than 1, the value of U as given by the above equation is negative. The above equation is called, this equation called Bond-Lens equation. This equation U is equal to Z positive Z negative E square A n upon R naught 1 upon n minus 1. This equation is known as Bond-Lens equation and is very important for your examination. Bond-Lens equation.